मित्रों नमस्कार। सदीनामा पत्रिका से मैं मीनाक्षी सांगानेरिया। नाबार्ड का 41वां स्थापना दिवस मना। 13 जुलाई 2022 बुधवार को नाबार्ड ने अपना स्थापना दिवस समारोह मनाया। मंच पर उपस्थित थे मनोज पंत, आईएएस अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त पश्चिम बंगाल, उषा रमेश सीजीएम नाबार्ड, डॉक्टर AR खान सीजीएम नाबार्ड, साक्षी गोपाल साहा जीएम PNB SLBC कन्वेनर और राज्य सरकार के विभागों से वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, SLBC के संयोजक बैंक, आरआरब के अध्यक्ष, वाणिज्य बैंकों के आंचलिक क्षेत्रीय प्रमुख, सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक, कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, जिला स्तरीय अधिकारी, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक, अग्रणी जिला प्रबंधक एवं अन्य हितधारकों ने भाग लिया। 1982 में अपनी स्थापना के बाद से नाबार्ड अपनी अनगिनत गतिविधियों के माध्यम से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में प्रयासरत रहा। ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने में सतत प्रयासरत नाबार्ड ने 12 जुलाई 2022 को अपनी यात्रा का 41वां वर्ष पूरा कर लिया। इस अवसर पर नाबार्ड पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय कार्यालय में कृषि में तकनीकी हस्तक्षेप पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया और एक वित्त चित्र जारी किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल में नाबार्ड की प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख किया गया। साथ ही पश्चिम बंगाल के लोगों की दृढ़ता और आशाओं की प्रशंसनीय कहानियों का संकलन के रूप में 2 बुकलेट सफलता की कहानियां, पश्चिम बंगाल में नाबार्ड की गतिविधियां और सफलता की कहानियां, जनजाति विकास निधि का विमोचन किया गया। अपनी 4 दशकों की यात्रा में नाबार्ड ने कई समुदाय आधारित संगठन को बढ़ावा दिया, जैसे जमीनी स्तर पर विकास के लिए स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादन संगठन आदि। इस कार्यक्रम के दौरान में इनमें से कुछ SHG, FPO और OFPO को उनके उल्लेखनीय कार्य हेतु सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि पंत ने अपने उद्घाटन भाषण में नाबार्ड द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए और नाबार्ड को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के विकास में एक महत्वपूर्ण सहभागी के रूप में नाबार्ड के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर AR खान ने ग्रामीण बंगाल के विकास में नाबार्ड के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नाबार्ड पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय और व्यापार लक्ष्यों का अतिक्रमण करते हुए विकास और संवर्धनात्मक गतिविधियों के तहत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने में सफल हुआ। उन्होंने कहा कि वर्ष दर वर्ष आधार पर 65% की वृद्धि दर्ज करते हुए नाबार्ड का कुल कारोबार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ₹13,989.80 करोड़ तक पहुंचा और इस तरह नाबार्ड पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय कार्यालय वित्त वर्ष 2023 में और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचने का अपना लक्ष्य रखता है। धन्यवाद ज्ञापन दिया अरविंद सरकार DGM ने। Thank you for this opportunity, and indeed I am really happy to be part of this very important event of NABARD. At the outset, I must commend and congratulate NABARD on their 41st Foundation Day, and congratulate also the Regional Office of Calcutta, with whom we have been very closely working. NABARD, in fact, is a very close partner of the state government, as has been said by my predecessors who spoke on this. Previous speakers, we have been working very closely with NABARD on the agriculture sector and of course rural infrastructure sector for the betterment of the rural communities in terms of financing, in terms of hand-holding and facilitation of FPOs. Recently AIF is a successful story which has been mentioned. So this is a very strong partnership and we will continue to have this partnership in days to come. Generally, যেটা হয় লাস্টে যে বলে খুব কিছু বলার থাকে না, because in fact all the previous speakers have narrated everything in so detail, and what Dr. Khan spoke so lucidly about the entire activities of NABARD and the state government's partnership. তো আমার কিছু বলার মানে it's a repetition of that. And of course, Mr. Saha and Onkar, my colleague, also mentioned about what we are doing in close collaboration with NABARD.
But nevertheless, I would just say that on this occasion, because it's a very important, very happy occasion, I would say that NABARD has been in this long journey of 40 years, have been consistently working in the nation building in terms of initially financing and refinancing, of course, towards the end, towards rural infrastructure development program, as one of the presenters said, in the consultancy sector also, which NABCON is doing, and we are closely associated with NABCON also in the fishery sector, in PHE sector, in the health, in the drinking water sector, and also in the agriculture sector. So this has been a long, successful journey, and of course, 40 years, it's a time to introspect, a time to look back as to what we have achieved, where we stand today, and what are the challenges in the days to come, and how we are going to meet these challenges. Some of the things were mentioned by Mr. Saha regarding how technology can be a driving tool or a driver for improved agricultural practices or farm practices. So that is where we have to now concentrate how we can improve agriculture, how we can improve the livelihood of the people who are associated with farm activities. Before coming here, we were discussing about how many of the FPOs and self-help groups in Bengal have performed, how innovative they are, what sort of enterprise they have shown, which was very encouraging, and I was really enthralled to hear the experiences of Mr. Ramesh, who recently visited Murshidabad, and of course Dr. Khan was narrating very success stories about the performance of the self-help groups and FPOs. This is the area where we need to concentrate. We have to identify what are the gaps, what more facilitation, what more financing, what more hand-holding we need to do in order to bring about a movement in this sector, which will really have a huge impact on the lives of the people living especially in the rural areas of our state. As has been rightly said, our state is endowed with huge natural bounty. If you look at the physiographic divisions of our state, we have the Himalayas, we have the ocean, we have the mountainous areas, we have the dryland area, we have the Indo-Gangetic plain. I mean, what not? This is the only state which is endowed with Himalayas and the ocean, and none other state in the country has this God-given bounty. So we have to make the best use of this. We have to understand the requirements of each of the physiographic zones and see what best can be done to improve the activities in that area. We have the largest delta, the Sundarban. We have it. We have the best of the situations that will provide us the opportunities to reach out to the people of those areas and help them, handhold them, facilitate them, finance them in order to reap the benefits of this natural bounty. And I think NABARD has been doing a commendable job in this regard. Or jekhane jacche ami shunechi, with the people, they have been interacting very closely, understanding the requirements, understanding the gaps, and trying to reach out to them with whatever the support is required. So eta amader korar darkar ache, and agami dineo ami asha korchi with the strong partnership with NABARD and of course with the SLBC, which is the lead in terms of the financing with the banks. We will be working together to reach out to the communities in the remotest part of our state and see what best we can do in terms of providing them the facilitation. We have been talking about the marketing. Of course, there are many new initiatives which have been taken in terms of marketing of the products that the self-help groups, the FPOs produce. We certainly have to take care of the backward and the forward linkages. Like we have, the Shishti Shi, which is an initiative of SRLN. We have the Sabla Mela, which is done every year. These are different types of initiatives, and the presenter also mentioned about various melas which are held with the help of NABARD. So these are various things which we have to look into, and of course we have to move forward in terms of e-commerce and e-trading, but we are talking about today. So in days to come, I think with the use of technology, with the use of more know-how, and with removing the information asymmetry between the people and us, we will be able to develop it faster, move faster, and meet the challenges that we are facing today. I don't think I have anything more to say. What has been said by Dr. Khan is that entire story of NABARD and how we have been doing. In terms of rural infrastructure, I would just like to mention that initially
when I was in the district, since then I have been working with NABARD. We had small projects in the district, at that point of time. Srimati Usha Ramesh ma'am, CGM NABARD, and all the participants and dignitaries present on this occasion. It's my pleasure to be present over here on the eve of 41st Foundation Day celebration of NABARD. On behalf of SLBC West Bengal, I congratulate and convey my best wishes on the eve of 41st day of celebration of NABARD. I would just like to present a few words on the theme of today's webinar, that is technological intervention in agriculture and a role of startups in promotion of agribusiness in West Bengal. India's farm sector is increasingly embracing technology at various levels, which will intervention of modern agriculture technology become long-run equilibrium when the farmer has full information about the new technology and its potential. These new technologies are aiding farmers past all stages from sowing to crop protection and nutrition, cultivation and harvest, to connecting them to maps. Use of satellite data for weather forecasting. New methods of spray pesticides is also being used. Besides that, we are also adopting chatbot technology, data analytics, Internet of Things, data science technology, crop forecast technology, online marketplace platforms, blockchain technology, etc. in agriculture. Agriculture is and will remain at the core of human progress. That's why it is important to give a technological boost growing to be available. We will definitely witness a new way of agriculture in the coming days. In our state, all our member banks are wholeheartedly participating in agri-financing. And I would like to highlight the performance of the last financial year. So far the annual credit plan is concerned, it has reached to, and out of that, that is 85% of the ACP achievement, which is growing on year to year. Let me take about a few minutes to give the context that NABARD, as Madam has already mentioned, was created on 12 July 1982. And 40 years of this journey has been full of challenges in the agri sector. Right from the challenges of enhancing the production in the beginning, then the natural resources management, expanding the outreach, and of course the marketing, the technology innovation in agriculture, and then most recently making the whole operation cost effective through digital platforms. All these years NABARD has been able to do a wonderful job, and I must thank and congratulate each one of you, particularly the state government, the banking institutions, the NGOs, the SHGs, the CSR partners, who have been equal partner in our journey in this last 40 years in developing the rural and agricultural economy of the state and of course of the country. If I recall, in 80s when NABARD was created, we started with a maiden exercise of forming the collectives in the form of Farmers Club. And the focus was to provide extension services to the farmers through the platforms of Farmers Club. That Farmers Club, when we formed, it was dedicated to the nation by none other than the late then Prime Minister of India, Madam Indira Gandhi. And then we never looked back. When it came in 90s, there was another innovation in terms of credit deployment.
based on the natural endowment, and that is where we started our potential linked credit plan exercise. The institutions of DDMs were created at that point of time. The government's policy, the RBI's policy to have a service area concept was introduced. All this was directed towards deepening and widening the agri and rural credit in the states and the country. And these innovations today have got tremendous results if you look back what has been the outcome on the ground. Later on, a historic decision was taken by the Government of India and RBI that in agriculture sector, the infrastructure which is much more inadequate needs to be addressed very comprehensively and with the involvement of the state governments. And that is how in 1995 the Government of India set up a fund with NABARD called Rural Infrastructure Development Fund. And I must congratulate the state governments and of course the other stakeholders that they have equally responded with the same spirit to identify the new infrastructure, the critical needs in the rural sector, prioritizing the projects, and the fund which we started with just 2,000 crores at the national level to complete some of the irrigation projects which were languishing for want of funds. It has grown to its a size which is on annual basis today. It is something called 40,000 crores on an all India basis. Even in the state of West Bengal, on an annual about 1,500 to 2,000 crores, we are channelizing under this fund to create infrastructure. Not only that it was in terms of number, in finance, but also in terms of coverage. The fund which started with just 2-3 activities, today it is having almost 39 different types of infrastructure activities which have which are being supported under this fund and with the support of the state governments. When I talk in terms of West Bengal, I think that our chief guest today has been very instrumental in this regard in creating infrastructure, channelizing the fund of the RIDF through different departments to create all kind of infrastructure facilities that we have today in the state of West Bengal. Sir, thank you, sir, for your efforts. And then moving on, we had a watershed development program which was, we collaborated with under Indo-German collaboration in Maharashtra and Gujarat, and it has been expanded throughout the country to address the needs of the dry areas, the rain-fed areas, how to conserve the soil and water through the watershed approach, and a lot of innovations were brought in to develop this in the state of West Bengal. Also, almost 7 to 8 districts which are relatively dry, and under rain-fed conditions, we have implemented almost 56 to 60 watershed development projects. The next step, which was another innovation that in the tribal development program, we know that 8% of our population in the country is a tribal population. And their livelihood was based on the wild collections and the forest. They did not have durable durable assets to create income. It was the NABARD who created a model with a German bank called KfW to have a WADI type of initiatives, and that is today popularly known as WADI project, to help the tribal families promote their livelihood through the orchard-based interventions, and preferring to that, lot of other initiatives starting from the resource management, starting from the skill development, collectivization and value addition, marketing and agribusiness innovations. Today in the state of West Bengal, most of the tribal dominated districts, I think 7 or 8 districts, we are running this project, and more than 40 to 50 thousands of tribal families in the state alone have benefited this kind of interventions.
who can forget the outreach program, the livelihood program, and the greatest financial inclusion program in 90s, that is what we call today self-help group, which has become the talk of the every household. The self-help group has turned into the world's most or the biggest microfinance initiative created by the Reserve Bank, NABARD and Government of India, and now it has been scaled up to a level where we are impacting almost 12 crores of families in the country. In West Bengal alone, there are 11 lakh self-help groups which are operating and getting converted into the rural micro enterprises and promoting their own livelihood. आप ना जो गाँवों में जा रहे हैं तो उसका आप कैसे सामना कर पा रहे हैं? लोग आपको कितना इसमें प्रोत्साहित लग रहे हैं और कितना आपको इस प्रोग्राम करने में कोई दिक्कत आ रही है या कुछ भी है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा। नाबार्ड की जितनी योजनाएं हैं अगर हम गांव में देखें तो जो भी किसान हैं या आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं या दूसरे ग्रामीण भारत में रहने वाले लोग हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारी योजनाएं हैं उसका पूरा लाभ उनको मिल रहा है और उनके आय में बढ़ोतरी हो रही है, उनके आजीविका में मजबूती आ रही है। तो ये हमको हमेशा जो है एक प्रोत्साहन देता रहता है, एक प्रेरणा मिलती रहती है कि हम और अच्छा कोशिश करें। और सरकार के साथ मिलकर हम प्रयास ये करते हैं कि जहाँ पे कहीं भी जो क्लस्टर्स हैं, जहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे कोल्ड स्टोरेजेस कहीं पे नहीं है, रेफ्रिजरेटेड वैन्स नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, तो उस फैसिलिटी को हम कैसे क्रिएट करें स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ये हमारा प्रयास रहता है। सर, जब आप आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं तो उन लोगों को आपके साथ कैसे वो व्यवहार करते हैं? क्योंकि आदिवासी क्षेत्र वाले बहुत ज़्यादा गरीबी की रेखा के नीचे हैं और उनका जो व्यवहार आपके साथ कैसा रहता है? व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, खासकर जो झारग्राम ज़िला है, मालदा है और पूर्व मेदिनीपुर है, पश्चिम मेदिनीपुर है, जहाँ जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन के जो हमारी योजना है कि हर ट्राइबल फैमिली को 1 एकड़ ज़मीन पे बगीचा लगा के उनका डेवलपमेंट करके उनको दिया जाए, ताकि वो उससे अपनी आमदनी बढ़ा सकें और ना सिर्फ आमदनी बढ़ा सकें बल्कि उसके साथ मार्केटिंग की व्यवस्था वो कर सकें, प्रोसेसिंग की व्यवस्था कर सकें सब लोग मिलके। अभी हमारे स्कीम के अंदर ये है कि इन तमाम महिलाओं को या किसान जो हैं ट्राइबल हैं, वो उनको जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के और उसको मार्केट से जोड़ें। तो मैंने देखा कि इन तमाम क्षेत्रों में जो ग्रामीण महिलाएं हैं या जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, इन्होंने अपनी आजीविका को मजबूत किया है और नाबार्ड की जो योजनाएं हैं वो उनसे वो काफ़ी संतुष्ट हैं और वो उनका प्रयास यही रहता है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा नाबार्ड के साथ मिलकर फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम काम कर सकें, एसएचजीज़ के ऊपर हम काम कर सकें, ताकि जो है सिर्फ उनका एक तरफा विकास ना हो बल्कि चौतरफा विकास हो। इसी में हमारा प्रयास है और इसमें हमें पूरा सहयोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्राइबल फैमिलीज़ का भी मिल रहा है, एनजीओज़ का मिल रहा है, बैंक्स का मिल रहा है। हमने एक स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम इसके लिए चलाया था वाटरशेड प्रोग्राम में और ट्राइबल एरियाज़ में, ताकि सस्ते ब्याज दर पे हम बैंक को लोन दे सकें, ताकि बैंक जो है इन ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते दाम पे जो है लोन उपलब्ध कर सकें। प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो इरिगेशन के लिए है, पोल्ट्री के लिए है, डेयरी के लिए है, सिर्फ ऑर्चर्ड तक वो सीमित न रहें बल्कि पोल्ट्री को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, डेयरी को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी एसएचजीज़ के माध्यम से उसको भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। सस्ते ब्याज दर पे लोन की हम व्यवस्था इस रिफाइनेंस स्कीम के अंदर किए और इसका पूरा लाभ उनको मिल रहा है। सर, दर क्या रहती है लोन की? हमारा रिफाइनेंस जो है बैंकों को 3% पे है, बैंक उसमें 2% और मिला के 5-6% पे वो लोन उनको देते हैं। तो ये हमारी एक स्कीम है जो तमाम कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी है, रीजनल रूरल बैंक्स के भी है, दूसरे बैंकों के लिए भी है और इसका पूरा लाभ हमने देखा है कि इन सब क्षेत्रों में उसको पहुंचता है। धन्यवाद सर। 14,000 बेसिकली इसमें 2000 करोड़ तो ऐसे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट को हों, जैसा कि एसीएस साहब बता रहे थे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए।
और बाकी जो है इसमें करीब 200 करोड़ जो है ग्रांट के बेस पे तमाम विकासात्मक और डेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए हैं। जो बाकी का है उसके लिए प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन 300 करोड़ का है स्टेट गवर्नमेंट को, हमने स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन को, ताकि वो पैडी प्रोक्योरमेंट में उसको बढ़ावा दे सकें। और उसके अलावा जो रीफाइनेंस हम देते हैं कमर्शियल बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, ताकि वो सस्ते दाम पे किसानों को না আমাদের আরআইডিএফ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড যেটা আছে এটা রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার পার্টনারশিপ উইথ নাবার্ড। তো আমরা আরআইডিএফ ইজ ওয়ান এরিয়া ওয়্যার উই এনগেজ ভেরি স্ট্রংলি উইথ নাবার্ড ফর ডেভেলপমেন্ট অফ ভেরিয়াস রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার। So how much has been spent from that fund for development of That's what infrastructure? around 2000 crores we have Last year. last And year, this year and you this expect- year we are expecting more than 2000, around 2500 also. सर, उन लोगों को जो आप है ना, लोगों को जो आप दे रहे हैं वो लोग वापस भी आपको कर पा रहे हैं फिर वो जो लोन? नहीं, लोन तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट का लोन होता है, स्टेट गवर्नमेंट लोन लेता है और उस लोन के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जाता है। 2500 যেটা দেখা আলোচনা হলো, আমরা এফপিও নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, এআইএফ নিয়ে আমাদের সাকসেস স্টোরি আছে যেটা আপনি শুনলেন, আরও এগ্রিকালচার ফাইন্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে আরও কী কী করা যায়, টেকনোলজি ড্রিভেন আরও এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামসগুলোতে নাবার্ডের সহযোগিতা আমরা নিই, যেহেতু ওদের কাছে এক্সপার্টিস থাকে, কনসালটেন্সি সার্ভিসেসগুলোও আছে এবং সুপারভাইজারি রোলও আছে। তো নাবার্ড এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর একসঙ্গে কাজ করে এই কাজগুলো করে। primary role taking and subsidy. NABCON is a subsidiary of Consultancy. We provide consultancy services, monitoring of the project, putting in other stakeholders also. So it's basically our professional wing to provide consultancy services in all the development projects of agriculture